जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग हुई थी. But before I talk about that, exactly a year before that, I went to Malaysia to Sunday Lagoon Park, which had the longest pedestrian bridge. और वहाँ पे एक experience है जिसको करने के बाद they give you certificate of insanity. So if you do it to get a certificate of insanity, this was a bungee jumping experience, and here I was, बड़ा शौदा लोगों के fear break कराना, पाकिस्तान में इधर-उधर trainings कराना, मैंने कहा ये तो कोई चक्कर नहीं है, मैं बहुत आसानी से कर लूँगा. So मैं पहुँच गया तो diving board था, imagine के 16 मंजिला इमारत की height, और उसमें एक diving board लगा हुआ है, पैर बंधे हैं, पैर padded है, and my instructor says Umair move forwards. और मैं जितना भी कुछ हो जाऊँ लेकिन वो 3 कदम, those 3 steps were the toughest 3 steps I've taken in my life. I just couldn't move. He kept pushing me, धक्का देते रहे, मैं बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ा. जब मैं edge पे पहुँच गया मुझे लगा हो गया तो कहता है no, half of your feet should stick out. यानी आधे पैर बाहर होना चाहिए. 16 मंजिला इमारत पे आप बोलते आधे पैर डाइविंग बोर्ड से बाहर, बड़ी मुश्किलों से आधे पैर बाहर है. तो मुझे कहता है now open your arms. Look at that beautiful horizon. Count from 5 to 1 and let's go. सारा दोस्त का काम है. हर किसी को ये होता है. तो मैंने हाथ धोए और हाथ मुझसे खोलने गए थे. The horizon was not beautiful. Let me tell you, it was very ugly at that point in time, and I didn't remember the count. 5, 4, 3 on 3 I let go. This was one and the second one. Coming back to Umair Jaliawala once again, skydiving up in the air, about 14,000 feet in the air, small plane, and I'm hanging to my expert diver. Tandem करनी पड़ती है पहली skydive. उसका नाम था हुसैन. उसकी 5,200 dives थी. So my religious sense of humor said, Hussein, if I'm stuck, I'd say, Ya Hussein, please save me. So here I was, मेरे पैरों के बीच में फंसे रहे. जहाज का दरवाजा पूरा छोटा जहाज तो हिल जाता है, और मैं नीचे देखता हूँ सिर्फ बादल ही बादल नजर आ रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लफ्ज़ नहीं बता सकता मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था. But I definitely didn't want to do it. And I'm like, why am I doing this? People will not give me extra brownie points for this, and why do I need to put myself into these troubles? And here I am hanging, and Hussein says to me, look at that beautiful horizon. Exactly the same instruction. I look at it and he jumps off. I need to tell you this, boys and girls, ladies and gentlemen, कि जितना खौफ डाइविंग बोर्ड के ऊपर था, जितना खौफ जहाज के अंदर था, once you are off the diving board, once you are off that जहाज, there is no खौफ at all, there is no fear at all. जब आप डाइविंग बोर्ड से आगे बढ़ जाते हैं, then you trust the God. Not that you have a choice, but you trust the God. Once you are off that जहाज, you trust the parachute. आप कहते हैं खुल जाएगा, हर किसी को तो बोलता है मेरा क्यों नहीं खुलेगा. So letting go has a lot of power. Let go. They say when you let go is never alone. It's always followed by a D in the end. So let go is let God. And God is powerful. God is beautiful to control it all. You and I are not born with any fear. So this conversation is about letting go. And I'd like to start with one of my fellow trainers. He used to read this often. By the way, I picked up the sapphire video for you, but because you can't see the PowerPoints. लेकिन आप समझ लें कि ख़वातीन लड़ रही हैं. ये वो है जो कि sapphire को कोट कर सके. How many of you looked at the video, by the way? Okay, you did. I think Pakistan will transform जब हम किसी book launch पे इस तरीके से लड़ेंगे. I think Pakistan will transform जब यहाँ पे entrepreneurship conference हो रही होगी और लोग लाइनें लगा के बाहर खड़े होंगे जैसे आजकल sapphire और खादी के बाहर खड़े होते हैं. I'm reminded of the wisest man of his time named Socrates. सुकरात 2500 साल पुरानी बात है. अपने दौर के सबसे ज्यादा अक्लमंद या वाइज जिन्हें कहा जाए या दाना जिन्हें कहा जाए, और अपने बारे में कहते थे I know only one thing for sure. मैं एक बात यकीन से जानता हूँ और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता. जो कहते हैं सिर्फ जानते हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरा फलसफा या फॉर्चुनेटली इवॉल्व कर गया. जो मुझे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम जानते हैं, मैं उनसे घबराता हूँ, क्योंकि जो ये कह रहा है कि वो जानता है इसका मतलब उसने फुल स्टॉप लगा दिया है. There are no full stops in life. They only commas.
जरा वो झुके हुए होते हैं, वो दरख्त जिनके अंदर फल होते हैं वो झुके हुए होते हैं, जिनके अंदर फल नहीं होते वो अकड़े हुए होते हैं. That's the rule of nature. So anybody who's down there, anybody who's up there will always be humble. जिसमें जितना झुकाव है उसकी उड़ान उतनी बुलंद है. तो झुकाव के बाद नौजवान आता है, तो आपकी नहीं तरह का नौजवान सुकरात के पास आता है, कहता है तेरे पास जितना इल्म है मुझे दे दे. तो सुकरात दरिया के किनारे पे होते हैं, उसको मुस्कुरा के देखते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं. फिर नौजवान दोबारा कहता है तेरे पास जितना इल्म है मुझे दे दे. तो सुकरात उसको गर्दन से पकड़ते हैं और उसका मुंह पानी के अंदर डाल देते हैं, और मुंह पानी के अंदर डाले रखते हैं. ये हाथ पैर मारता है, हिलता जुलता है, किसी तरीके से निकल सके सुकरात की गिरफ्त से. बट सॉक्रेटिस just keeps him there, doesn't let him get out of it. अब वो हरकत कर रहा है, जिसमें में पानी जा रहा है, just too abrupt, too difficult to digest. जब उसकी हरकत कम होना शुरू होती है, when he's almost passing out, तो सुकरात उसको निकालते हैं. अब इसका हश्र नशर हो गया है, ये नीला पड़ गया है, मान पड़ गया है, not conscious, takes time to come back to his state, and then he does, he says to सुकरात कि मैंने तेरे बारे में इतना सुन रखा था, ये तूने क्या जहालत दिखाई मेरे साथ. I had heard so much about you, what did you just do to me? तो सुकरात उसको कहते हैं कि जितनी तलब तेरे अंदर हवा के लिए थी जब तेरा मुंह पानी के अंदर था, जितनी तलब तेरे अंदर हवा के लिए थी जब तेरा मुंह पानी के अंदर था, जब इतनी तलब इल्म के लिए आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा. And therefore I believe that you can have the finest of the speakers, you can create the organizers have done a fantastic job putting all of this together, but the desire has to come from you. I come across people say, hey, आके यहाँ पे इवेंट पे आके सवाल करते हैं, या सेशन के बाद आके होते सवाल. अगर तुम्हारा सवाल इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो तुम पहुँच जाते दफ्तरों पे. अगर तुम्हारा सवाल इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो तुम एक ही ईमेल 10 बार 12 बार भेजते रहते. Because the desire has to come from you. The investor will not come to you, the people of wisdom will not come to you, you will have to go after them. And it takes that persistence, which unfortunately we missed out on. So the Sapphire video, I wanted to link up with that. Janab, so my fellow trainer, Nadeem Chauhan, who passed away last year, fantastic as he was, he taught us this. And I thought it relates very well with entrepreneurship. Iqbal का कला, वो कहते हैं वो फरेब खुर्दा शाही, जो बला हो करगिज़ों में. फरेब खुर्दा से मुराद क्या है? So फरेब इस धोखा, and खुर्दा यानी खुद को धोखा देने वाला, वो फरेब खुर्दा शाही. And you all understand शाही. इकबाल कह रहे हैं वो खुद को धोखा देने वाला शाही, और खुद को धोखा क्यों दे रहा है? क्योंकि वो पला है करगिज़ों में. करगिज़ कौन होते हैं? नरगिस नहीं, करगिज़. जी, करगिज़ कौन होते हैं? कबूतर. कौन बोल रहा है कबूतर है वो? vultures. So इकबाल कहते हैं कि वो शाहीन, खुद को धोखा देने वाला शाहीन, जिसको पाला पोसा क्या हो गिद्धों के दरमियान, vultures के दरमियान, उसे क्या है मालूम, क्या है राह और रस्म शहबाजी. वो नहीं समझ सकता शहबाजी के रस्ते क्या है, वो नहीं समझ सकता शहबाजी की रस्में क्या है, वो नहीं समझ सकता शहबाजी की गुफ्तगू क्या है. So you and I are shaheens, but we have been brought up in the mahal of vultures. These vultures are our fears. These vultures is the ego that we have carried forward. These vultures are people around us. मतलब 4 लोग बैठे होंगे और 3 फारिग तरीन लूजर लोग होंगे, लेकिन वो आपको कहेंगे कि तू ये काम नहीं कर सकेगा, और आप उसकी एडवाइस को सीरियसली ले लेंगे. कोई अक्लमंद कहे, कोई करने वाला कहे तो समझ आता है. Now what are these vultures? Very quickly, little time. If you can please move the slides. Sorry, this is not working. You know, if you look at the comparison, that's a vulture. It will always be disgusting. गिद्ध जो है वो हमेशा मरेले के पीछे जाता है, यानी मुर्दार को जाके खाता है, कभी अपना शिकार नहीं पकड़ता. तो जो भी आप तस्वीरें देखेंगे उसके अंदर आपको गिद्ध या तो खाता हुआ नजर आएगा मुर्दार को, या इंतजार करेगा किसी जख्मी को लेके. कोई जख्मी जा रहा है, कोई कमजोर जा रहा है, कोई मरने के करीब है, तो गिद्ध इंतजार में बैठ जाता है कि जब ये मरेगा तो मैं इसको जाके खा सकता है. मुर्दार का गोश्त खाता है. And that's what Iqbal is implying here. But moving forward, please quickly इधर आगे चलिएगा. Slide आगे लेके जाए. Yeah. Now some paradigms that you and I have been taught, and I believe that these are again in the vulturous thinking that we have come up with. Our beliefs are very powerful.
For example, the number 1 says, old is? Says who? Says who? I believe most old is obsolete. Exactly. But unfortunately, we've been brought up in an environment कि अंकल पुरानी गाड़ी लेके चले होंगे, या काला धुआं मार रही होगी, उसमें से तेल टपक रहा होगा, वो सड़क पे लाने के काबिल नहीं होगी, लेकिन अंकल उसको देख के क्या कह रहे होंगे? बेटा आजकल तो ऐसी गाड़ी आती भी नहीं है। आप भी ड्राइवर पे खड़े हो गए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल बिल्कुल ऐसी गाड़ियां नहीं आती। Times have changed. अंकल आंटी पुराना माइक्रोवेव मिलना चाहिए हो सकता। आंटी पुराना माइक्रोवेव लेके कहेगी कि बेटा मेरे जहेज का है। So I believe most when Steve Jobs came back to Apple, he was rushed into a room, shown all the devices of Apple. उसके अंदर MacBook था, उसके अंदर the first Mac, उसके अंदर Lisa, Newton, all the legacy devices of Apple. So Steve said, "What is this?" He said, he was told that this is our identity. ये हमारी शनाख्त है, ये वो devices हैं जिसे हमने बनाया है, या जिसने Apple को बनाया है. So Steve ने कहा, "That's all right, I understand that, but why are they here?" He said, क्योंकि हमारी शनाख्त है. So he said the place for these devices is the museum, not the Apple office. एक कंपनी जो कि अपने माजी पे इतना फोकस हो, वो मुस्तकबिल की बात नहीं कर सकती. I don't want these devices here. Get them out. So there are some old is good. Nusrat Fateh Ali Khan, yes, he is the legacy, which he should live on. But most old is obsolete. BlackBerry died. 2012 best smartphone in the world. BlackBerry. If I talk about BlackBerry today, and if I ask how many of you use BlackBerry, very few hands would go up. BlackBerry was smart. BlackBerry was intelligent. BlackBerry had the finest hardware and the software. Presidents and executives would use it. When I started my corporate career back in 2009, I had a BlackBerry and go up to influential people and say, "Sir, what's your BBM?" That was a big deal to have a BBM. But when the world was thinking of devices, of working with developers, thinking of applications, when the world was working on Play Stores and App Stores, BlackBerry was just too arrogant and they thought कि हमारा executive नहीं इस्तेमाल करेगा. Old is obsolete. Scrap the old. You have to find out new rules for success. That's number 1 paradigm. Number 2, please go forward. Number 2 is slow and steady. Says who? जी सर, आपका हाथ ऊपर किया, क्या हुआ था इसके अंदर? क्या किसकी रेस हुई थी? किसकी रेस हुई थी? खरगोश और कछुए की. अब आप ईमानदारी से बताएं, इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला है? ये कौन है जो इनकी रेसें कराता फिर है? कहते चलो रेस कराते हैं. कछुआ और खरगोश की रेस कराता है अपनी मर्जी से, किसी के कहने पे नहीं, और गलत खिलाड़ी पे पैसे लगाता है. और जब वो हार रहा है तो क्या करता है? सुला देता है, या मैच फिक्सिंग करता है, सुला देता है खरगोश को, और लेसन भी अपनी मर्जी का. That slow and steady wins the race. Ask yourself this question: Why did the tortoise win? Turtle क्यों जीता? कछुआ क्यों जीता? Determination. Did it win because it was slow and steady? No. Don't bullshit yourself. That wasn't the reason. Had the rabbit not fell asleep, खरगोश अपनी जिंदगी, खरगोश अगर ना सोता तो टर्टल अपनी जिंदगी लगाते लेकिन नहीं जीत सकता था. The moral of the story is not that slow and steady wins the race. The moral of the story is when you're at work, do not sleep. Otherwise, you will finish the job. Therefore, Google's value says fast is better than slow. Fast is better than slow. These are the times of not thinking slowly. These are the times of thinking fast. If you're thinking slow, you'll become obsolete. Think fast, fail fast. अगर कामयाबी के लिए बेइज्जती कराना जरूरी है, तो सवाल ये कि आप कितनी जल्दी बेइज्जती करा सकते हैं. 10 साल में कराएं या साल में कराएं. So when I started out, I was really blessed. I had some fantastic teachers to me when I stepped into the training world. ऐसे उस्ताद जो कि मेरी कामयाबी में अपनी कामयाबी से ज़्यादा खुश होते थे. And you should look out to those teachers, find those teachers. Tina Sani taught me this last year. She said, "Umair, pick your teachers wisely." एक अच्छा उस्ताद गला बना
सकता है और एक फारिग उस्ताद गला बिगाड़ सकता है। लेकिन मेरे साथीदार ने मुझे सिखाया था, मुझे कहा था बेटा 5 साल ट्रेनिंग है। आपने बात सुनी है, जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो लोग आपको कहते हैं वो अभी तो हुआ है 3 साल लगा ले, 3 साल। Whenever you give it this time limit, always ask why. So people told me it will take 5 years to make a name for yourself. So I asked why. So they said you will do 20 sessions in a year, you will do 100 in 5 years. That's a good time to make a name for yourself. My interpretation was it doesn't take 5 years. What does it take? 100 sessions. So I did 80 sessions in my first year. That was 4 सालों का experience in 1 year. I was faster. That's the choice I made. So highway is clear. You can choose to be a Ferrari, or you can choose to be a City, or you can choose to be a Mehran. The choice is yours. What speed do you want to pick for yourself? So slow and steady does not win the race. Again, a paradigm that we've been taught over and over. इसी तरीके से हमें बताया गया, पढ़ोगे लिखोगे, खेलोगे कूदोगे, जितने नवाब हैं आप उठा के देख लें। Dismissing the school experience, I think it has value. It has a lot of value. Social system, बहुत सारी चीजें बाहर भी हो सकती हैं स्कूल के, but I have some respect for it. I don't want to completely dismiss it, but the paradigm और कुछ पढ़ने वाले लोग होते हैं. I am sure कि आपके दरमियान में कुछ लोग ऐसे लोग हैं हर वक्त पढ़ते रहते हैं। बैठे आपके इर्द ऐसे लोग जो कि हर वक्त पढ़ते रहते हैं। शायद वो आज भी इसलिए ना हो क्योंकि कोई एग्जाम आ रहा होगा। ये वो लोग हैं जो कि हर वक्त पढ़ते रहते हैं। आप कोई एग्जाम से पहले कभी हफ्ता पहले मॉर्निंग है या फला चैप्टर तुमने किया, कभी नहीं बनाएंगे यार, अभी तो आपको लिस्ट में नहीं है। कभी एग्जाम में बराबर में बैठ जाए तो आप खुश होते हैं कि आज तो भाई की ईद होगी, लेकिन उल्टा इनके बराबर में बैठना ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि लिखे जा रहे होते हैं, लिखे जा रहे होते हैं, लिखे जा रहे होते हैं। आप इकबाल बने हैं, आप सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। ये बी कॉपी है, ये बी कॉपी से सी कॉपी से डी कॉपी। आपका पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो गया, आप पलट के देख रहे हो और सवाल तो नहीं तैयार है, ऐसा कैसे लिख रहे हैं आप? बाहर ये खुश होके आ रहे हैं, सहमत होके आ रहे हैं कि चल 40 मार्क्स तो आ जाएंगे, उन्हें उसमें भी होना होगा। एक सवाल है क्या सही सवाल? So research says that there is no connection between success in school and ability to accumulate wealth. कितने लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हाथ उठाएं। Bad news guys, you're not taking a lot of money in your life. कितने लोग पढ़ाई में मारे गए, ढाबों पे मिलने वाले, झूले लगाने वाले? आपके बारे में एक बात आपको शाबाश, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह पे माशाल्लाह। ये वो लोग हैं जो कि एग्जाम से हफ्ता पहले कुछ नहीं पढ़ा होता तो सोचते हैं आप क्या करें, तो ये अपने जैसे 4 लूजर्स को उठाते हैं जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा होता, और फिर साथ मिलके एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं जिसको कहा जाता है कंबाइंड स्टडी। When 4 losers come together and they think that they can together change the world. And they say, you know about these sessions, but I think there is great things to learn from people who do these other things. By these other things, I mean participate in events, come and network with people, put up mini projects, volunteer their time. They turn out to be better risk takers, they turn out to be better personalities, more out there. What's the point of having a very high GPA but not having any ideas in your mind? What's the point of being very, very high GPA? आगे चले वाला मैं चलता रहूँगा। So let's go beyond these slides. There are a lot of other beliefs that we have been taught over and over, but I can't spend more time on this. So Pastor, can you come to the next slide? Now there's some vultures in terms of entrepreneurship which I want to talk about. Slide change करने वाले भाई जल्दी जल्दी आगे चले जाओ, अपना slide change मुझे दे दें जनाब। So वो very important Shahi, we have talked about it. Can you go to the next slide please? Good. Okay, next. Fine. Now you'll keep going. Now you will be told that beta you don't have the talent. देखो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए खास टैलेंट चाहिए होता है, एक खास स्किल सेट चाहिए होता है, और वो देखो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारा बाप मजदूर आदमी था, तुम्हारी फैमिली में किसने नहीं किया? यू नो डॉक्टर्स फैमिली में, इंजीनियर्स फैमिली, यू डोंट हैव द टैलेंट। सिमिलरली यू विल बी टोल्ड कि बेटा कंपैरिजंस, आपका एक बच्चा या आपका
काम है बच्चा, और हमारा मुकाबला बेटा मुबीन को देखो कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, बेटा मुबास को देखो कितना माँ बाप का ख्याल रखता है, बेटा मंसूर को देखो हाफिज है, बेटा तौकीर को देखो कितना लोगों, मैं साला एक और वो साला everything you will be compared. Then number 3 is experience. आपको कहा जाएगा बेटा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल कंपनी के अंदर लगा लो, spend 2 years, 2 साल कर लो, तुम सीख जाओगे इदारा काम कैसे करता है. You will be told this experience हासिल कर लो, I'll come to the culture of this. Then number 4 is timing. बेटा इस वक्त हालात ठीक नहीं है मुल्क के, आपने सुनी है बात, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, क्या बहुत लंबा मोड़ है. मैं 28 साल का हो गया, मोड़ खत्म नहीं हुआ अभी तक. रियान भाई आप कितने 50 किलो हो गया, मोड़ खत्म नहीं हुआ अभी तक. यह बहुत ही लंबा मोड़ है. It's just not ending. You will always be told this is not the right timing. But you know who says this is not the right timing? This is a guy fooling a girl, and the girl keeps saying please please घर को बता दो, घर वालों को बता दो, कहता है maybe this is not the right time. बेटा एक तनख्वाह आती रहनी चाहिए, देखो घर का किचन चलता रहना चाहिए. तुम फ्रीलांस करोगे, तुम कारोबार करोगे, you will not be stable, and when you're not stable you don't get married. When you're not stable कल की सवाल होगा हमेशा. ये वो कौम है जिसका ईमान है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है. ये वो कौम है जो कि कहती है कि जो मेरा नहीं है वो कोई मुझे दे नहीं सकता, और जो मेरा है वो कोई मुझसे ले नहीं सकता. Then you will have your own fears. How many of you fear spiders? How many of you fear lizards? छिपकली से कितने लोगों को डर लगता है? शाबाश, उर्दू में का तो ज़्यादा आप लोग से. Lizard का बड़ा छिपकली होगी ना. कितने लोगों को हाइट से डर लगता है? कितने लोगों को पानी से डर लगता है? कितने लोगों को बंद कमरों से डर लगता है? Claustrophobic, it's cool to be claustrophobic these days. Okay, कितने लोगों को प्यार से डर लगता है? चमार से डर नहीं लगता है? Understand this, you're not born with any fears. इंसान कोई खौफ लेके नहीं पैदा होता unless के माँ ने उस टाइम के दरमियान जब आप अंदर घूम रहे थे स्टार प्लस देखा हो. If the mother is watching Star Plus with the child in her womb, in her body, then there is high chance कि बच्चे के अंदर तुलसी वाले कुछ ना कुछ असरात जरूर होंगे. तो अच्छे काम करें. I have a video on that. You can go to my page and look at that. How Jews bring up sir, पीछे चले जाएं. फिर आखिरी चीज है ईगो. पीछे चले जाएं स्लाइड पे. Another thing is ego. मैं कैसे कर लूं? मैं बड़ा आदमी हूँ. जब अमीर खान ने अपना बैंकिंग करियर छोड़ा, अब्बा जो है उनकी टाइयों पे चलते थे, उनकी शर्ट्स पे चलते थे. जिस दिन he quit his banking job, the parents said, और जब दर्जी बन गए, कहते हैं हमारा बच्चा दर्जी बन गया. The term fashion designer wasn't there. You and I are in our anas. करने के लिए काम इतना पड़ा है कि गटर खुलने का काम शुरू करो तो अरबपति बन सकते हो. But we think that we can't. We think that we can't. All the things that you and I see around. पाकिस्तान में कोई ऐसी सर्विस नहीं अब होना शुरू हुई है कि आप कॉल करें आपके घर का इलेक्ट्रिशियन का मसला हल हो जाए. हमारे पास टैक्सी सर्विसेज के मसले रहे, हमारे पास इतने बेसिक मसाइल हैं, लेकिन आप और मैं पढ़े लिखे लोग एक बड़ी इमारत में जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन एक छोटे ख्याल में बड़ा एफर्ट करने का नहीं सोचते. Where the real opportunity lies. Please think about all of this. My comment to all of this very quickly, running out of time. Number 1, जो आपको पीछे से आया क्यों आगे करते हैं? Hello? Maybe you're taking it right. Go slow. Number 1 is talent. You would hear this every time you hear talent wali debate. You say, you know what? I am ashraful makhluqat. जब मेरे खुदा ने मुझे बनाया था तो मुझे ये नहीं कहा था कि तुम अच्छे हो, मुझे ये नहीं कहा था कि तुम बेहतर हो, मुझे ये कहा था कि तुम बेहतरीन हो. मैंने तुम जैसा नहीं बनाया, ना तुम जैसा तुमसे पहले था, ना तुम जैसा तुम्हारे बाद होगा. जब तुम्हारा मेरा मुजस्मा तैयार किया था आदम का, इंसानियत का, तो पूरी तमाम मखलूकात को कहा था कि तुम इसको सजदा करो, क्योंकि मैंने इसको वो सिखाया है जो कि तुम नहीं जानते. पौधे को लात मारो, पौधा क्या
Kick-Ass. Yeah, by the way, she was talking about KAS, Kick-Ass. I found it out. She couldn't have used it because she's a politician. I can do whatever I like, you know. Difference. So, पोता रात मारता है, कितनी देर में मारता है सर? आज अगली मिनट का स्टॉप वॉच लेके जरा like 5 seconds. How much time does it take for a donkey to kick back? Within a second, there is no time. It's a reaction. कुत्ते को लात मारा ऐसे नहीं कुत्ता सोच में पड़ जाता है. आज मुझे लात पड़ी है. मुझे अक्सर लात पड़ती है. आपको कभी भैंस पीढ़ी में जाके दो भैंसें एक दूसरे से गुफ्तगू करती हुई नहीं मिलेंगी. मैं सारी जिंदगी दूध देती हुई आई हूँ. अल्लाह ने इंसान को ये शर्त बख्शा है कि वो सोच सकता है. ये सिर्फ एक इंसान कर सकता है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हो और जिब्रील आके और खून बह रहा हो और जूतियों में जाके खून पड़ जाए. अर्श के फरिश्ते 2 मरतबा रोए. एक जब इब्राहीम ने इस्माइल की कुर्बानी दी और दूसरा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए गए. पत्थर बरस गए, जूतियों में जाके खून भर गया, भाग रहे हैं. ये रहमत लिल आलमीन और जिब्रील आपको हुक्म देते हैं, हुक्म कम्युनिकेट करते हैं कि अगर आप हुक्म दें तो खत्म कर दिया जाए, इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए. लेकिन एक तरफ से पत्थर आना और दूसरी तरफ से दुआ के लिए हाथ उठना, दिस इज व्हाट एन इंसान कैन डू. दिस इज व्हाट So very quickly, between while you sit here, जब आप यहाँ पे बैठे रहे, 2012 की रिसर्च है कि इस दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजी है, all the laptops, desktops, dumb phones, smartphones, mainframes, flying equipment, space equipment, satellites, missile technology, put all of that together and put just one human brain on the other side. 2012 इस पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक तरफ रख दें और एक इंसानी दिमाग को दूसरी तरफ रख दें तो बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाया जा सकता था. As you sit here, you are sitting with 8.4 trillion Pentium 4 computers between your 2 ears and behind your forehead. That is 8 sharp followed by 11 zeros. This is what makes me say कि और तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुटाओगे. That's your power. But the downside of this technology is कि 8.4 trillion Pentium 4 computers, एडवर्ड लेबोनो कहते हैं कि हार्डवेयर मस्त है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर में. आप ये फोन लेके बैठे रहे, हाँ इस पे सॉफ्टवेयर आप नोकिया 3310 का लगा दें, क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे और क्या खेल सकेंगे? स्नेक. तभी हम स्नेक बने हुए घूम रहे हैं. Why? Because we don't have the software. We are carrying amazing hardware, MacBook, but we choose to use MS-DOS on that. What can you do with DOS even though you have a MacBook? So learn the software. A software needs upgrades. A software needs applications. And a software needs antivirus. Otherwise you can be infected by the new folder.exe virus. This virus is every evening on Pakistan television. रात को 8 बजे से 11 बजे तक न्यूज एंकर्स बैठे हैं, मुंह से झाग निकले जा रहे हैं जितनी बड़ी खबर है. बेनजीर चल पड़ी है, सिक्योरिटी के मसाइल है, and the entire call is glued looking at that. आप वो पूरी रात शो देखते हैं, आपको सुबह ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान बंद हो जाएगा. There will be nothing like Pakistan will be gone. You don't have to waste your time on that. मेरे अब्बा न्यूज देखते 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे. 11 बजे वो ये बता सकते हैं कि समा ने क्या दिखाया और जियो ने क्या नहीं दिखाया. और मैं सोचता हूँ कि आपके पास कितना टाइम है और उसकी वजह से स्ट्रेस से बेटा तुम्हारी फ्लाइट की क्रैश कर गई होती तो यकीन नहीं है, कर गई होती तो. Why? Because you are watching. Please listen to the input that you are getting. हज़रत अली का कौल है, तुम्हारे अंदर 2 भेड़िए, एक अच्छाई का है, एक बुराई का है, एक अच्छे कामों का है, एक बुरे कामों का है. सवाल क्या है, इसमें से कौन सा हावी होगा? कहा जिसको तुम ग़िज़ा दोगे. हदीस में आता है कि तुम भट्टी वाले के पास जाओ, कुछ नहीं तो पालक समेट के वापस आओगे. तुम अतार के पास जाओ, कुछ नहीं तो खुशबू समेट के आओगे. चेंज द कंपनी, योर अशरफ. द टैलेंट इज नॉट द प्रॉब्लम. नंबर 2, आपको जो लोग कहते हैं कंपैरिजन, आप कंपैरिजन करना अंगूठा दिखाएं उनको. आई वांट यू टू लुक एट योर थंब राइट नाउ. व्हाट डू यू सी? ठेंगा.
17वीं सदी, कुरान पहले कहता है, फिर बाद में 17वीं सदी का आते हैं। वो लोग जो कहते हैं वो जिंदा कैसे उठा ले जाएंगे, उन्हें कहो कि अल्लाह उनको उनकी असली हालत के अंदर ले आएगा, यहाँ तक कि उनको उनके उंगलियों के निशान तक वापस दे देगा। आपने कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूर हो सकता है। 17वीं सदी में रिसर्च में पता चला कि उंगलियों के निशान हर इंसान के यूनिक हैं, ये किसी और के नहीं। जिस तरह हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, हर मोबाइल का आईपीआई होता है, इसी तरह हर इंसान अपना डीएनए लेकर आता है। कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है। आपका मुकाबला मुझसे नहीं, मेरा मुकाबला आपसे नहीं, किसी कदम से नहीं, किसी और से नहीं। You are what nobody has ever been, and you are what nobody will ever be. You are a brand by birth. That's what you are. Number three, जो लोग आपको कहते हैं बेटा एक्सपीरियंस हासिल करो, खासतौर से घर वाले कहते हैं, मैं आपको उसका जवाब बता रहा हूँ। जब भी घर वाले आपको एक्सपीरियंस की बात कहें, कितने लोगों की शादी हुई है? ठीक है, जब आपकी शादी का वक्त आए तो आप घर वालों को कहेगा, डैडी मम्मी अभी तो नहीं देखी, आई नीड सम एक्सपीरियंस। I need 2 years of experience and you know what it is. इतना बड़ा काम है, वो इंसान खुद ही फिगर आउट कर लेता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर खुद नहीं बन सकता। और वो तरबियत वाला काम, सब खुद ही गिरा रहा है, कुछ टमाटो से डरा रहा है, कोई पटाखे के नाम से डरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। Everybody is figuring out. So again, it's selective application. Then people who say timing, I don't believe in that. Let's go on. Stability, there is no stability even in jobs. Anywhere if there is, what's the point of living your life anyway? Most of the heart attacks happen on Monday morning between 8 a.m. and 9 a.m. दुनिया में ज्यादातर दिल के दौरे पीर की सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान पड़ते हैं। क्यों? क्यों? आप में से कोई ऐसे हैं जो कि कॉर्पोरेट जॉब करते हैं? जरा सर कैसा लगता है काम पे जाना? तुम तो भी आके सवाल भी कर रहे थे। मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, उसका फोन मुसलसल बजे जा रहा था, मेरे साथ बैठा था, वाइब्रेट हो रहा, उठा नहीं रहा, कैंसिल भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं? तो मैंने फोन देखा, उसको लिखा था ढक्कन कॉलिंग। तो मैंने कहा वो सिर्फ ढक्कन कहता है माय बॉस। I told him that it's all right, I understand, but I feel horrible for you because every single day of your life you walk into an office or you go work for somebody who you yourself refer to as Dhakkan. I can only imagine the Dhakkan life that you're living. Therefore, हमारे अपना कभी भी घरों पे अच्छे मूड लेके नहीं आए। जब शाम को अपना घर आते तो क्या मूड लेकर आते हैं? यहाँ थके हुए, पसीने के अंदर है, गुस्से के अंदर है। अब्बा आते तो हम बच्चों को साइड पे कर देते, बेटा आपको आ गए। And of course, walking like a sumo wrestler coming into the house, और अब्बा भी तलाश में है, किस चीज की तलाश में है? कुछ मिल जाए, कोई पायदान उल्टा हो, कोई लाइट फालतू में चल रही हो, कोई टेलीविजन की आवाज ऊंची हो, कोई बच्चा ज्यादा होशियार दिखा दो, और अब्बा सुनाना शुरू, मैं सारा दिन काम करके आता हूँ। तुम लोगों से एक ही अब्बा सुनाए जाते, हमारी अम्माएं भी ट्रेन में सुनने के लिए सुनती रहती है। लेकिन एक बताता है अम्मा सुनते रहे, साथ टीवी देख रहे, साथ बच्चों को मल्टीटास्किंग। लेकिन एक बताता है कि अम्मा की भी बस हो जाती है, अब अम्मा सुनाना शुरू। आपको क्या लगता है काम सिर्फ आप ही करते हैं? अब अम्मा सुनाए इस तरह होता वो सुना भी नहीं सकते, लेकिन आपको मुझे नहलाते हुए दो चिमाट लगा रहे हैं। कभी ऐसा है बचपन में आपको चिमाट पड़ी और समझ में आया क्यों पड़ी है? आज आपको समझ आ गया, अब्बा इसके पीछे और अब्बा के पीछे उसका बॉस। आपको चिमाट पड़ती है, आप कहते हैं मैंने तो सारा होमवर्क भी किया, मैं तो सारा काम कर, मैं तो बैठ गया, आपको मुझे खावा मामा को सारा कुछ बोल नहीं सकता। आप गली में जाके कुत्ते बोला, वो कुत्ता कहता है कुत्ता मैं किसी और को काट लेता है, फिर जिसको काटा वो कहता है पत्नी क्या दस्ते में आता है किसी कुत्ते ने काट लिया। ये passing it on. Most of the people are wasting their lives working in environments which are toxic, doing things over and over again, not growing and feeling horrible about their life. Most of the people die with their music still inside them. Don't be one of them. You have a music inside you, you have a melody inside you, and the world needs to see it. The wealthiest
on the planet is the graveyard, because the graveyard has people like you and me dying or dead now, lying flat with all their talents. A graveyard has talents that the world never saw. A graveyard has aspirations that never converted into reality, and a graveyard has visions that never turned into enterprises. Don't die with your music still inside you. I want to end with a beautiful thing my fellow trainer used to say. Pastor, we have carried on this legacy. अपने खुदा से ही मत कहो कि तूफान कितना बड़ा है. Don't tell you about how big the storm is. अपने खुदा से ही मत कहो कि तूफान कितना बड़ा है. ओ अब हम नहीं मानते, ओ पैसे नहीं मिलते. अपने खुदा से ही मत कहो कि तूफान कितना बड़ा है. तूफान से ये कहो कि तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है.